On behalf of the Richmond Fellowship Society, India, Lady Irwin College of Delhi University, and RAHAT Charitable Medical Trust, I welcome all the participants and our esteemed guests, our speakers today in this third webinar in the series Mental Health and Happiness. We began in July with our first webinar, which was on the power of gratitude. Ms. Vibha was our key speaker, and she talked about the attitude of gratitude and how it helps us give happiness not to just ourselves, but also to create a happy society and people around us. The second webinar was trying to understand learning and unlearning about mental illness. Our speakers were Dr. Sujata Sharma, Professor Manish Jha, and Dr. Kalyan Sundaram. Dr. Anupa Sidhu, the director of Lady Irwin College, was also there to give us a perspective of how educational institutions can partner with NGOs to create an environment for learning for everyone. Our third webinar today is on the art of caregiving. I'm very happy that we have amongst us our speakers who are not only caregivers at an individual level, but they're also working at an organizational level. We have Rajeshwari Iyer, who's been an exemplary caregiver and also an advocate for people living with mental illnesses, PMIs, to advocate for their rights. We have Professor Murthy, who is a psychiatrist and who will be looking at the science of art giving. And we have Rita Seth, who is not only a caregiver, but also she is the founder and trustee of Sambandh Health Foundation. And we are happy that Dr. Sujata Sharma, who was our speaker in the last webinar, today is joining in a different capacity as our partner for this series of webinars. I welcome all of you. Our next webinar, which will be the fourth in the series, will be next month, 6th of October, which will be on the joy of volunteering. And we hope to share experiences of volunteers who have enjoyed themselves and felt empowered and enriched. Our moderator for today is Professor Aparna Khanna. She is teaching in Lady Irwin College in the Department of Development, Communication and Extension. She's also a member of the Governing Council of the Richmond Fellowship Society Delhi branch. Before I hand over to her, I would like to share a few lines which I wrote today this morning when I turned from a secondary caregiver to a primary caregiver of my nephew who lost his mother yesterday. And since he was the only child without a father, I think I am going to have a big challenge. So I've written a few lines which I would like to share. Blending primary colors, red, blue, green, give variety of hues. Caregiving like color blending of several skills honed over time. Caring needs grit, grace, and courage for facing challenges all the time. Caring, an artistic process, a journey of self-discovery. Confronting self for dealing with emotions to make spiritual connection. Receivers become pillars of support with humility, compassion, and love. Telling yourself it's okay to be vulnerable, letting your guards down. So with that, I hand over to you, Aparna, and I'm sure it will be
an experience which we will all enjoy. Thank you. Thank you so much, ma'am. I know this is third in the series, and we've all been, looking forward to all the eminent speakers who have been able to contribute so much to our understanding and learning about various aspects of mental health. And I'm happy to share that, Dr. Desai, Dr. Sujata, and Dr. Murthy are some of the leading practitioners who are here with us today in the webinar. And I think their support and presence makes it very, very special for us. From our end, we are the caregivers, we are the families, we are the people who are mental health activists, we are the people who are mental health advocates in our own individual small capacities, and each one of us, coming from the professional fields that we belong to, are trying to work together and synergize our energies to promote mental health, work towards not only creating awareness, but also create sensitivity and break the stigma and silence around mental health. So I would like to thank everyone who's in the webinar right now, and all others who are going to join us, I'm sure are planning to join us soon. And I'm sure that again that this will be a very, very informative afternoon for each one of us. Before we move on to knowing who our speakers are, although ma'am has already shared a few some information about the speakers, but before I do that, I would like to invite Dr. Sujata Sharma, who is also the founder of RAHAT, which is the NGO partner which is supporting us. We are a triology, Lady Irwin College, RAHAT, and Richmond Fellowship Society, Delhi, India. And obviously with Dr. Mridula Seth and Dr. Jha representing the Delhi branch, we are all together in this endeavor to reach out to people and talk about mental health. So Dr. Sujata, ma'am, you are wearing a different hat today. Please, if you could just highlight the reason for this partnership and how RAHAT, RFS, and Lady Irwin College are together trying to create an environment in which we can have this dialogue around mental health, and how students and practitioners coming together can add value to this conversation around mental health. Over to you, ma'am. Thank you, Aparna ji, and it's great to be back on this event. And unexpectedly, I'm here. I was actually supposed to be going for an event in which I was a guest speaker. And thanks to G20, the event has got cancelled with the dress rehearsal of the traffic and all that. So this was to be in the Press Club of India. So I'm here. So and I'm glad to be here because this is home. And I really look forward to listening to as much as possible that I can to all these eminent, the galaxy of speakers. We have nobody less than Dr. Murthy, who has been my teacher in NIMHANS, a stalwart, really a tall person in this field, and Dr. Mridula Seth, who is so passionately a mental health activist. Rita ji, I have not interacted so much, but I know so much about your work, and it's excellent. And Rajeshwari, I've had many occasions to interact, and she touches you from the heart. So it's going to be a great afternoon. Now to talk about RAHAT and association with this webinar series and this webinar series. And prior to that, we have had very successful collaborations between these three institutions, one academic and two NGOs. So it's been wonderful. And it started actually in 2017, where we decided to do training for a mental health campaign, on spreading awareness and removing the stigma of mental health. And the event was on the World Mental Health Day in 2017. So it became a hugely successful event, and the collaboration also was hugely successful. And then we knew instinctively that NGOs working individually is not going to make much of an impact, and we all need to collaborate and put our hands together
to address this huge problem of the gap in mental health, demand and services. And I think in that context, today's seminar is really very, very useful, because the entire gap is actually filled by the caregivers. The number of professionals we have and the number of people who need mental health help is actually being addressed by the caregivers. And so, tending to the caregiver needs and skilling the caregivers to do a more efficient job of caregiving is very important. And I think that's why this seminar is landmark. And as far as RAHAT's activities are concerned, we still are very much involved with the mental health campaigns. And unfortunately and very sadly, we lost our visionary and our leader, late Dr. Avdesh Sharma, who was the managing trustee. And since then, I've taken over as a managing trustee. But I'm committed to fulfill his passion and continue his work and the legacy he's left behind to make public education of mental health, really make an impact by bringing awareness and change in the minds and the mindsets of people in the society regarding mental illness. And that's why we continue this collaboration. And we are doing several projects. Now we will be doing more trainings, similar trainings to what we've done, and can continue our campaigns. So I just want to wish this webinar a huge success, and for all the speakers who are here and who are going to enlighten our audience. It's as a managing trustee of RAHAT, I'm grateful to you all as somebody who is also collaborating with RFS Delhi and LIC, Lady Irwin College, that wish you all a great success, and thank you for being here and going to be enriching our minds and souls. Thank you so much. Thank you, ma'am. I think I'm sure each of us values the energy and the knowledge that different partners are bringing in this huge effort to bring not just the mental health practitioners, but the common people like you and me into this whole conversation. And we hope that in today's webinar, we have many young people who are joining us, and they will be able to establish that link and value the comments that you all are going to be sharing, and take this conversation forward and be part of our team and strengthen our hands. So thank you everyone for joining in. There are more of us who have joined, and I would like to introduce Rajeshwari ji, followed by Rita ji and Dr. Murthy. And once I have introduced all the speakers, all the three speakers, I will request each of the speakers to share their views on a couple of questions that our team has identified for them, for us to understand the whole, concept of caregiving and how it can be an art and is very much a science. So let me tell you about Rajeshwari ji. Rajeshwari ji is an NGO. Is basically, I think, I like to call her an encyclopedia on mental health, because kuch bhi chahiye ho, kuch bhi puchna ho, kahin madad chahiye ho, the first person go is Rajeshwari ji. She is the founder of an NGO called ROSHNI, Action for Mental Illness, which she established about 20 years back. And one of the main motivations for Rajeshwari ji to start ROSHNI was her own daughter, because she is a primary caregiver to her daughter, and who has schizophrenia, and she's now stable but under treatment. And she's been the motivation behind Rajeshwari ji today being there for each one of us as encyclopedia on mental health. She has started several support groups in hospitals, and since last 3 years, Rajeshwari ji has been a member of CMHA committee, which works at the national level to work towards promoting mental health. She has worked with the Disability Commissioner, Delhi government in the advisory committee and the research committee for last 3 years. She's worked closely with DALSA, and at present, she's also a member of the advocacy group of an NGO called Shanti in Delhi.
This is a very brief introduction. राजेश्वरी जी, आपका परिचय बहुत सारी चीजें बताने को, पर एक संक्षेप में बस इतना ही, और आई एम श्योर बाकी जब लोग आपकी बात सुनेंगे तो आपको और बेहतर जानेंगे और समझेंगे। रिता जी की बात करते हैं। रिता जी जो है अपने ब्रदर के लिए केयर गिवर हैं। He is a person who's living with a mental health illness, and she is the co-founder of Sambandh Health Foundation, which is located in Haryana. Her organization Sambandh works in the area of mental health since 2011, and it runs community mental health programs for awareness and sensitization. Sambandh is recognized. It was recognized in 2016 for its contribution to the caregiver movement in India by the World Federation of Mental Health at the World Congress in New Delhi. She's passionate about human values and the role they play in relationships and hence recovery of persons with mental illnesses. She loves to work with her hands, especially dig them into clay. And let me tell you, her hands are very, very creative. With her hands, she's been able to support and guide many of us when we started on our journey of trying to find our bearings as caregivers. Thank you, Rita ji, for being with us. I now introduce Professor R. Srinivasa Murthy. Thank you, sir. Thank you for joining us. I have very few lines about you, but I'm sure they speak volumes because you are one of the senior most persons here right now and in this field, in the field of mental health. Professor R. Srinivasa Murthy was formerly a professor at the National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. He has worked with World Health Organization for over 5 years. He has been working zealously to make mental health care, take mental health care from clinics to the communities by empowering people for their mental health. So during the last 10 years, Dr. Murthy has developed several self-care resources for emotional health of persons living with cancer and caregivers of children with special needs. In today's webinar, we will also be sharing this resource with all the participants here. And I'm sure they will draw a lot of value from what sir has to tell us about the science of caregiving, and also the resource that we will be sharing with you. It's a brief PDF document, which I'm sure can be used as a guideline for caregivers. So thank you so much for being with us. We are indeed honored to have such august speakers amongst us. And I'm sure आप जो भी बताएंगे आप दिल से बताएंगे, और हम लोगों को जिसे कहते हैं ना कि सिंपल तरीके से कि केयर गिविंग क्या है, आज हमें वो समझने में आसानी होगी। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अपने स्पीकर्स के लिए हमने कुछ सवाल सोच रखे हैं बेसिस देयर एक्सपीरियंस एंड हाउ दे कैन गाइड अस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर राजेश्वरी जी। तो राजेश्वरी जी, आपसे बहुत कुछ सुनना समझना है, लेकिन केयर गिविंग के रेफरेंस में कैन यू प्लीज शेयर सम थॉट्स ऑन व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय केयर गिवर्स। केयर गिविंग आसान नहीं है, ये आपको, मुझे और हमारे जैसे अन्य कई लोगों को जो यहाँ बैठे हैं मालूम है। तो व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय केयर गिवर्स इन जनरल, एंड देन प्लीज इफ यू कैन टेल अस देन व्हाट आर सम ऑफ द वेज बाय विच दोस चैलेंजेस कैन बी ओवरकम, क्योंकि चैलेंज बहुत है, आसान नहीं है एक केयर गिविंग करना, और खासकर अगर हमारे कोई अपने जो है वो पर्सन विद मेंटल इलनेस है, डायग्नोज मेंटल इलनेस है। तो ऐसे में प्लीज टेल अस सम ऑफ द चैलेंजेस एंड हाउ कैन वी ओवरकम दोस चैलेंजेस। ओवर टू यू राजेश्वरी जी। माइक म्यूट करना होगा राजेश्वरी जी, आपका 1 मिनट, एक बारी माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हो गया, वी कैन हियर यू नाउ राजेश्वरी जी। थैंक यू अपर्णा जी, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया, कुछ बोलने का तो मौका ही नहीं दिया, काफी अच्छा लगा है। ऐसे केयर गिवर में आपसे पूछना चाहती हूँ, शुरू में जब ये मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसको पता भी नहीं है, कैन यू हियर मी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, तो मैं कहती हूँ जब शुरू में ये प्रॉब्लम आती है जिसको आधा पता भी नहीं है ये मेंटल प्रॉब्लम है या नहीं है, जब बच्चा शोर मचा रहा होता है तो
एज ए मदर उनको बिल्कुल चुप रहना चाहिए। पहले तो समझो वो क्या कह रहा है, किस वजह से शोर मचा रहा है। उसके बराबर आप भी बोलते जाओगे ना, आप भी अपना कोई एडवाइस देते जाओगे, तो वो बिल्कुल बंद नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब वो बोल रहा होता है तो आप चुपचाप रहना है। जो चीज उसमें मांग भी रहा है उसमें एक फुलफिल कर लो टाइम, जैसे उसका शोर बंद हो जाए, तो दैट इज एनफ। वो हो भी जाता है। दिस इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो चैलेंजेस है उसका मैंने टिप्स भी बता दिया कि हमें शांति से रहने से वो सामने वाला चुप हो जाता है। तो दूसरी बात यह है, कई बार बच्चे जो है सुबह उठेंगे, देर से उठेंगे और हमें बताएंगे भी नहीं, और उठेंगे तो कहेंगे हमें चाय दे दो, कॉफी दे दो। तो वो तो डिमांड ही करते रहते हैं। तो हम अगर कहेंगे उनको जाओ पहले ब्रश व्रश करके आओ, फ्रेश अप होके आओ, उनको तो मालूम नहीं फ्रेश अप क्या होता है। तो वो क्या करेंगे, पहले हमें दो। तो हम कहेंगे ठीक है हम दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद अपने आप ही रियलाइज करेंगे मुझे तो कुछ करके आना था, वॉशरूम वगैरह होके फिर ब्रशअप करके फिर आएंगे कॉफी पीने के लिए। तो उससे क्या है कि ये चैलेंजेस जो आ रही है उसका टिप्स यही है, वो अपने आप ही समझ जाएंगे। अगर मैं कहूंगी जब ब्रश करके आओ, फिर तो रिवर्स है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, हमेशा जो है, जो केयर गिवर्स जो होते हैं, जो पीएमआईस बोलते हैं, उसके रिवर्स में आप एक्ट करो। तो दैट इज द बिग चैलेंज और टिप्स आल्सो। जो हम उनके बराबर ही करते रहेंगे, उनसे आनाकानी करेंगे, तो उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और मैं लोगों को भी यही गाइड करती हूँ, इसमें काफी सक्सेस आई है मेरी तो। अपर्णा जी, आपने कहा था मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो 2 ही मैंने टिप्स बताए हैं। नहीं नहीं, पर आई थिंक राजेश जी, जो चैलेंजेस हैं, अगर एक आपने जैसे बताया कि इंडिविजुअल के लेवल पे है, और जैसे जो आप और पेरेंट्स को जब मिलती हैं, ज्यादातर आपके पास लोग किस तरह की मुश्किलें लेके आते हैं केयर गिवर्स, अगर आप कुछ थोड़ा सा वो बता दें, और फिर हाँ हम रीता जी से आगे बात करते हैं। हाँ, ऐसा है कि पेरेंट्स जो है, काफी लोगों को इस बीमारी में स्टिग्मा बहुत है, शर्म आती है। फोन में भी बात करेंगे, एक दिन के लिए बीमारी है, एक दिन 1-2 दिन से ही बीमारी है, या पड़ोसी को ये प्रॉब्लम थी। तो मैं इन चीजों को मैं मानती नहीं हूँ। एक दिन में ये बीमारी आती नहीं है। जब पर्सनली मीट करते हैं तो कहते हैं क्या बताएं जी, 5 साल से ये बीमार है। तो मेरा और साथ में ये मैं कहती हूँ, अपने घर का देखा करो, पड़ोसी का तो कोई रेफरेंस नहीं लेके आते हैं। ये यानी कि ये जो स्टिग्मा जो है ना, इसको रिमूव करने के लिए उन लोगों को भी बोलते हैं, कभी भी डॉक्टर और वकील या काउंसलर से झूठ मत बोला करो। जो हकीकत है उसको बताने से जो है आपको करेक्ट डायरेक्शन और सोल्यूशन भी मिलेगा। हर चीज का समस्या का समाधान है, प्रोवाइडेड अगर अगर हम लोग सच बोलने लगे तो। झूठ बोलेंगे तो फिर वही गाइडेंस भी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऐसे फैमिलीज आते हैं, उनको मैं गाइड करती हूँ अकॉर्डिंग टू एरिया जहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से हॉस्पिटल। और कई बार तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, वो भी मैं काउंसलिंग कहाँ होती है मैं बताती हूँ। और ये जो स्टिग्मा मेरा उतारने का भी कई पोस्टर्स, कई मेरे पास एल्बम्स वगैरह है जो जिसपे हमने काम किया कम्युनिटी लेवल पर, वो सारा दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाते हैं। और मोस्टली जब मैं घर आने की वजह से, और व्हेन दे सी माय डॉटर, तो वो खुद ही समझ जाते हैं, अरे बाप रे हम तो कुछ और समझ रहे थे, इनकी बेटी तो बिल्कुल काम है। ये मेरी बेटी का सवाल नहीं है, सवाल सबका है। जो भी काम हम करें ना, ये हमारे हाथ में है। अगर हम उसे उसके हिसाब से प्रॉपर ट्रैक में करेंगे ना, मेरी बेटी नहीं, सबके बच्चे ठीक हो सकते हैं। इट इज ए बिग चैलेंज, और मैं मानती हूँ, मैं करके भी दिखा सकती हूँ। और बोलिए अब। थैंक यू राजेश्वरी जी। आई थिंक थैंक ओके, यू फॉर सेटिंग द टोन। आपने केयर गिविंग पे जो बात शुरू करी है, अब ऐसे करते हैं, रीता जी से आगे पूछते हैं, और आई एम श्योर उससे जो है और कुछ सवाल निकल के आएंगे, एंड वी विल कम बैक टू यू विद सम ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट विल ओके, इमर्ज आउट ऑफ द डिस्कशन राइट नाउ। ठीक है, ओके, ओके। तो मैं रीता जी से जो है बात अब आगे बात बढ़ाना चाहूंगी अब वेबिनार के सिलसिले में। और रीता जी, जैसे कि
हमारे वेबिनार का ट्रेंड रहा है, we would also like to pose a question to you related to our theme. So जहां राजेश्वरी जी ने कुछ चैलेंजेस बताए हैं और वो कैसे प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को देती हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वी विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल अस योर व्यूज अबाउट द आर्ट ऑफ केयर गिविंग from both a personal perspective as well as the perspective of an organization like yours, from the Sambandh perspective, कि आप हमें थोड़ा सा और बताएं कि केयर गिविंग एक आर्ट क्यों है और कैसे. Please. Thank you so much. And I think I would like to begin by thanking RFS, Lady Irwin College and RAHAT for this opportunity. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केयर गिविंग का पैराडाइम है ये बहुत शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट होने की जरूरत भी है. जो पहले का पैराडाइम था या जो देखने का तरीका था, केयर गिविंग को देखने का तरीका, उसमें कहीं ना कहीं समझ ऐसी थी कि एक परिवार का सदस्य, चाहे उसे हम केयर गिवर करें चाहे प्राइमरी केयर गिवर कहें, वो सारी उम्र देखभाल करता रहेगा और जिसको मेंटल इलनेस है वो एक पेशेंट है जिसको सारी उम्र वो केयर रिसीव करने का वो हकदार है. और ये एक बहुत ही डेंजरस डायनामिक है क्योंकि इससे जो केयर गिवर जिसे हम कह रहे हैं, एंड स्पेशली अगर प्राइमरी केयर गिवर का कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी समझ लेता है कि मैं ही केयर प्रोवाइड कर सकता हूं या कर सकती हूँ और कोई फैमिली में इतने सेंसिटिवली केयर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो बंदा बहुत नेचुरल है कि वो किसी टाइम पे एग्जॉस्ट हो जाएगा. और बर्नआउट की बातें हमने हमेशा सबने सुनी ही है इस फील्ड में. और जिसको मानसिक बीमारी है वो हमेशा अपने आप को इनकेपेबल समझता ही रहेगा और डिपेंडेंट रहेगा. सो इस डायनामिक को चेंज होने की बहुत जरूरत है. ये सबसे पहले मैंने अपने परिवार में ही देखा. मैंने देखा कि मेरी मदर प्राइमरी केयर गिवर थी और मेरे ब्रदर जो थे वो बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. पर ये जब वैसे बीमारी हुई तो डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि अब आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज रहेगी. फैमिली ने भी यही सोचना शुरू कर दिया और ना उनका कोई सपोर्ट सिस्टम था, ना फैमिली को कोई सपोर्ट सिस्टम था. दवाई के अलावा और कोई प्योर सपोर्ट किसी तरह का भी दोनों को अवेलेबल नहीं था. टिल माय ब्रदर वाज अबाउट 52 years old. He had never gone to a rehabilitation center or attended a recovery program or my parents never had any support of a family self-help group. तो उसमें हुआ ये कि my mother got burnt out. She became bedridden for last 6 years of her life. But उस वक्त मैंने देखा that my brother rose to the cause and he started taking care of my mother. उनको बिस्तर से उठाना, कुर्सी पे बिठाना, वो सब और कोई नहीं कर सकता था, वो ही करता था. और भी मैंने देखा कि हम बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हुए गुड़गांव में एंड ही टुक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दैट शिफ्टिंग एंड सेटिंग अप द हाउस अगेन. तो फिर ये सवाल मेरे मन में आया कि हम सारी उम्र उसको इनकेपेबल देखते रहे, उसके पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाए, पर उसमें बहुत पोटेंशियल है जो अनयूज्ड है. क्या हमको इस डायनामिक को दोबारा से देखने की जरूरत है? ये सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में था ही. और अगर हम आज के दिन में देखते हैं तो ये पैराडाइम बहुत शिफ्ट हो रहा है. कोई भी अपने आप को केयर गिवर या प्राइमरी केयर गिवर नहीं कहना चाहता, इसलिए कि उसके साथ एक बर्डन की भावना जुड़ी हुई है, एक चैलेंजेस की भावना जुड़ी हुई है. बल्कि हमारे फैमिली सेल्फ हेल्प ग्रुप में जहां हम कोशिश करते हैं कि फैमिलीज ही उन ग्रुप्स को लीड करें. सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग्स जो होती हैं वो 80% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द ईयर आर एक्चुअली फैसिलिटेटेड बाय डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हु फील दे हैव समथिंग टू शेयर विद द कम्युनिटी. उनमें से एक ने कहा कि भाई हमने अपने घर का माहौल बिल्कुल बदल लिया है. हमने ये डिसाइड किया है कि जिसको मेंटल इलनेस है हमारे घर में वो हमेशा केयर रिसीव ही नहीं करते रहेंगे, वो भी एक फैमिली का इक्वल हिस्सा बन के रहेंगे और जो जिम्मेदारियां आएंगी फैमिली के ऊपर वो हम सब मिलके शेयर करेंगे. उसमें कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो भी उस कंट्रीब्यूटिंग टीम का पार्ट रहेंगे, खाली रिसीव नहीं करेंगे. लाइक ही सेड कि अगर मुझे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और मुझे केयर की जरूरत है तो जिसको मेंटल इलनेस है दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर मी. एंड ही सेड कि जितना हम लोगों ने लाइफ में इसको अपने घर में माहौल नॉर्मलाइज किया है उतना ये बर्डन जो मुझे फील होता था वो अब कम होता जा रहा है.
एट वन टाइम मैं अपने आप को प्राइमरी केयर गिवर मानता था, पर वो चीजें जो हैं वो अब चेंज हो गई हैं। तो अब जो पैराडाइम इमर्ज हो रहा है वो ये है कि हम फैमिली हैं, हम भाई बहन हैं, हम शायद नेबर और फ्रेंड हैं, और एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ जिसको मानसिक बीमारी है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग विद पोटेंशियल एंड विद टैलेंट्स एंड skill sets which we can help them mobilize their own potential. तो एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप की तरफ ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हमने 2011 में एक फ्रेमवर्क लिखा था संबंध शुरू करने से पहले, और सोचा था कि इस फ्रेमवर्क को अपना गाइडिंग मैनुअल की तरह यूज करेंगे, और ये लिखा था उन लोगों ने जो रिकवर हुए थे सिवियर मेंटल इलनेस से या उनकी फैमिलीज में। उसमें ये फैमिली डायनामिक में यही चीज हमने एक्सप्लेन की थी। पर 10 साल बाद जब ये डायलॉग एक्चुअली शुरू हुआ, तो थ्योरी में कोई चीज कहना आसान है, पर प्रैक्टिकल लेवल पे उसको होते देखा जब, तो बहुत ही वो टच करता है। और आज अभी जो मृदुला जी ने अपनी थोड़ी सी ब्रीफली स्टोरी शेयर की थी, उसमें भी हमने देखा कि यही ट्रांजिशन उन्होंने अपने घर में देखा है। चाहे उन्होंने प्राइमरी केयर गिवर शब्द यूज किया, पर ये बहुत साफ है कि जिस तरह से प्राइमरी केयर गिवर्स अपने आप को इतना बर्डन फील करते हैं, अगर वो फील कर रही होती तो वो आज यहाँ प्रेजेंट नहीं होती। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो ये सब हम देखना चाहते हैं, और ये सब ये ट्रांजिशन जो है ये अब आ रहा है। दूसरी चीज ये है, मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ चेंजेस की जरूरत है। जो फैमिलीज हैं उनके लिए साइको एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, और ये बाद में आई एम श्योर डॉक्टर श्रीनिवास बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि हमने देखा है फैमिलीज जब आती हैं तो उनमें बहुत गिल्ट और शेम और डिनायल की भावना होती है, और वो बहुत स्ट्रेस में होती हैं, लेकिन वो इसमें से किसी को भी एक्नॉलेज नहीं करना चाहती। उनसे अगर हम कहें कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो कहती है नहीं, हम बीमार नहीं हैं, जो बीमार है आप उसके लिए बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो हम उनके साथ इस चीज को रियलाइज करवाने में मदद करने की कोशिश करते हैं कि आप बीमार नहीं हैं, पर आप स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस की स्थिति से, गिल्ट और डिनायल की स्थिति से अगर आप अपने रिलेटिव को सपोर्ट करने जाएंगे तो आप रिकवरी में बहुत हेल्दी सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। अगर आप अपने आप को एम्पावर करेंगे तो आप एक हेल्दी सपोर्ट दे पाएंगे उनको भी। सो ये चीजें जो हैं, ये केयर गिवर की के सेल्फ केयर का ही पार्ट नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है परिवार होने के नाते, ऐसा मुझे लगता है। अपने आप में जो दिक्कतें हैं उनसे उभर के आना। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो फैमिलीज अवेयरनेस में और एडवोकेसी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस रन करना शुरू कर देती हैं, किसी तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, वो इंटरनल स्टिग्मा से बहुत अच्छी तरह डील कर लेती हैं। सो वो और भी एम्पावर हो जाती हैं इन चीजों के लिए। सो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे 2-3 चीजें हैं जो मैंने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि एक तो we need to focus on what is strong and not what is wrong. और ये सिर्फ जिनको मेंटल इलनेस है उनके लिए नहीं, फैमिलीज के लिए भी है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस्ड रहें, हम अपने रिलेटिव, अपने लव वन की स्ट्रेंथ्स पे फोकस्ड रहें, तो बहुत बर्डन हम जो है उसको शेड कर सकते हैं। और हम एट द सेम टाइम दूसरी चीज ये है कि टैलेंट्स और एस्पिरेशंस जो हमारे हैं और हमारे लव वन के हैं, अगर हमारा फोकस उन पे है, उनको प्रमोट करने में है, तो जो डेफिसिट्स और सिम्टम्स हैं उनसे हमारा ध्यान बहुत कम हो जाता है। और डेफिसिट और सिम्टम्स के साथ साइकियाट्रिस्ट डील कर ही रहे हैं, ये मेजरली उनका काम है, उनका रोल है, और वो अपना रोल जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। सो हर किसी को उनको पेशेंट की तरह देखना जरूरी नहीं है। एक कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बार सुना था किसी पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया हु सेड कि भाई आप बार बार मुझे पेशेंट करके क्यों रेफर कर रहे हैं, मैं आपकी पेशेंट थोड़ी हूँ, मैं अपने डॉक्टर की पेशेंट हूँ। which was really heartening to hear this come from a person. He said, yes, that's a relationship with my doctor, it's not the relationship with everybody in this world. So वो ये चीजें जो है हमको समझने की बहुत जरूरत है। और आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि एट अ पर्सनल लेवल एंड एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल वी वैल्यू द होल कम्युनिटी रिस्पॉन्स। अभी एक डॉक्टर अवनी शर्मा, उन्होंने एक वेबिनार में मैंने उनको कहते हुए सुना था कि
it takes a village to raise a child, और उसी तरह it takes a community to heal a mind. तो एक प्राइमरी केयर गिवर और एक बंदा जिसको मेंटल इलनेस है बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रह के अपनी बीमारी के प्रकोप से उभर नहीं सकते, ये मेरा मानना है। और ये हमने देखा है अपने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में, हर बंदे को पूरे कम्युनिटी की जरूरत है, नेबर्स की जरूरत है, रिलेटिव्स की जरूरत है, सबकी जरूरत है। सो उस कम्युनिटी पे भरोसा करके उनको एम्पावर करें कि कम्युनिटी में निकलें, कम्युनिटी रिसोर्सेज से कनेक्ट हों। हम संबंध में जैसे मैंने कहा कि फैमिलीज को भी यही कोशिश करते हैं कि वही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लीड करें, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल एडवाइस से। तो वो लीडरशिप रोल्स में आती है तो एम्पावर होती है। सिमिलरली जो मेंबर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनको हम कम्युनिटी में मिलते हैं, उनको भी हम मिनिमम स्टाफ सपोर्ट देते हैं, जिससे वो हमेशा लीडरशिप रोल्स में आते ही रहते हैं, उससे वो भी एम्पावर होते हैं। और when they need the support, we give that support to them, but the minute they don't need the support, we withdraw our support, because हर आदमी को सारे लाइफ लॉन्ग सपोर्ट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता। उसी कारण से हम ज्यादा लोगों के साथ भी काम कर पाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में काम करना नहीं पड़ता। ये हमने देखा है कि अगर फैमिलीज अपने आप को एम्पावर करने वाले काम करें, और जो मेंबर्स हैं या जिनको मेंटल इलनेस है वो अपने आप को एम्पावर करने वाला काम करें, तो उनकी रिलेशनशिप भी बहुत बेटर होती है, ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, बिकॉज दे आर बोथ कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे ये लगता है कि केयर गिवर्स के रोल में सेल्फ केयर की जहां बात होती है, वहां ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग टाइम फॉर एंटरटेनमेंट एंड मीटिंग योर रिलेटिव्स एंड ऑल दोज थिंग्स which we all know and talk about, paying attention to your health and everything. So I think संक्षिप्त मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है। I hope I was able to communicate it properly. Thank you, Rita ji. I think you were able to communicate it very effectively. एक दो बातें before I summarize my key insights from what you have just shared is that इस मीटिंग में भी बहुत सारे लोग हैं शायद जो सब शायद केयर गिवर्स ना हो, तो ऐसे में उनको केयर गिविंग शब्द को अगर थोड़े आसान शब्दों में बताना हो कि मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम जब किसी केयर गिवर की बात कर रहे हैं, क्या आप एक या दो सेंटेंसेस में केयर गिवर हमारे कॉन्टेक्स्ट में, आज की डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में केयर गिवर्स कौन है, ताकि आपकी ये बात के इट हैज टू बी अ म्यूचुअली empowering relationship, and caregivers are not always caregivers can be seekers also. वो बात शायद और बेहतर समझ आ जाएगी अगर आप केयर गिवर कौन है और पीएमआई के कॉन्टेक्स्ट में कौन है, एक दो लाइनों में अगर प्लीज वो भी। ठीक है। केयर गिवर पीएमआई के जिन लोगों को मेंटल इलनेस है उनके कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली उनकी फैमिलीज होती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज्यादा उनकी फैमिलीज ही होती हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और ये सब चीजें यहाँ बहुत कम हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हम सामने वाले को इस नजर से देख सके कि वो भी एक इंसान है। हम सब लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं, और हम ये जानते हैं कि वो भी उतने ही इंसान हैं जितने हम हैं। तो उनमें काबिलियत नहीं है, या उनकी इच्छाएं नहीं हैं, या वो अपने लिए स्वयं चिंतित नहीं है, या अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते, ये सब हमारा मानना शायद है, और ये हमारा मानना हम उन पे इम्पोज ना करें। हम उतना ही सपोर्ट दें जितना उनको जरूरत है, और हमेशा देखते रहे मौके उनको एम्पावर करने के, उनके साथ मिलके काम शुरू करने के, ताकि वो सपोर्टेड फील करें। उनको ये कम्युनिकेट करना जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, जहां भी आपको मदद की जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। ये रीएश्योरेंस देना परिवार वालों को बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो आम आदमी नहीं समझ सकता, पर परिवार समझता है, क्योंकि वो उतना ही उनको देखता है जितना, मतलब जब से ये बीमारी घर में शुरू हुई है तब से परिवार उनको देखता है, दोस्त उनको देखते हैं, तो ये लोग सब समझते हैं कि उनके चैलेंजेस क्या हैं। तो उनको ये रीअश्योरेंस और ये सपोर्ट कि जिस चीज में आपको सपोर्ट की जरूरत होगी हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप में बहुत काबिलियत है और हम चाहते हैं कि वो काबिलियत आपकी निकल के आए बाहर, उसमें हम आपके लिए सपोर्ट करने को तैयार।
मुझे लगता है ये 2 सेंटेंसेस में तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी। Thank you so much for clarifying, because केयर गिविंग को ज्यादातर जैसे और जो चीज आपने बहुत क्लियरली समझाई कि इट इज नॉट अ वन साइडेड एक्सपीरियंस, और जो आज आपने कहा कि हमारी सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कि जो आज केयर टेकर है या जो केयर जिनको हम केयर दे रहे हैं, कल हम वही हमारे केयर गिवर भी बन सकते हैं। तो इसलिए लेट्स क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर ईच अदर, एंड सो दैट let's not undermine the knowledge, the talent and the skill set of the person that we are taking care of today. ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। So great, thank you Rita ji. I think this makes it a lot more clearer for all of us, and I'm sure this will ravel further now that Dr. Murthy will be able to throw some more light on the aspect of caregiving from the point of view of a practitioner. So thank you, Dr. Murthy. I would like to try and I would like you to tell us as to Rita ji ने जैसे जो बताया, she's talked about the art of caregiving from an individual point of view, जो कि वो खुद एक caregiver हैं, और from the point of view of an organization that she runs, कि किस तरह से वो organization जो है उनकी लोगों की मदद कर रही है caregiving के process में। But सब can you please tell us about the science of caregiving? Art है, we all agree, because एक इंसान के साथ, your near and dear one, your loved one you are talking to, you are helping that person to manage their life better given the challenges of the mental illness that they are dealing with. But there is a science to it, sir. Please, can you elaborate on the science of caregiving from Thank a you very much. practitioner's point of view? Thank you very much. मृदुला जी, अपर्णा जी और सुजाता, रीटा जी और राजेश्वरी जी, आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, because India has been a leader in caregiving. So the main message which I want to share with you in the next 10 minutes is that the common sense of Indians has proved to be the science of caregiving. आप सोचते होंगे क्या डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? मैं 2 स्टडी बताऊंगा कि in 1970 में WHO did a study in 9 countries. 3 of them were developing countries, 6 were developed countries. It was a 5-year follow-up of schizophrenia. What they found shocked the whole world. They found that the people in developing countries like Nigeria, Colombia, and India did better. Agra was the center in India than the European countries and America and Russia. And in 1980s, there is a study of expressed emotions, which was done between 3 countries, England and Denmark and India. India, the relapse rate at the end of 1 year was only 14%, while it was 29% in England. So we are doing very well. And this was reflected also in the way Dr. Vidyasagar included families in Amritsar, in Vellore. Families have been a part of the care from 1958. So we have got something which is very, very proud of. But what is it that is very good about it? The most important thing that came up was sometime in the 1960s, when they looked at 3 mental hospitals, where they found in one chronicity was about 60% high, another one is only 15%, another one 30%. Then they found that the way the organization of the hospital, the way the people responded to the needs of the people made a difference in chronicity, which led to closing down of the mental hospitals in a big way. I told you about the expressed emotions. Again, very interesting one, that they found that when the patients were on regular medicines, in some there was a relapse, in some others there was no relapse. So they went in to study the attitude of the family, and they identified 5 things as important. 2 of them were positive, that is the warmth of the caregiver to the patient. The second one was the positive regard that the person has got to the patient. 3 were not so negative, positive, that is hostility, critical comments, and over-involvement. So there was a possibility by attitude change or the activity of the caregiver being positive to decrease the relapse. As I told you, the relapse rate was much, much less in high critical comments. For example, in India, the average critical comments were only 29%, while it was 56% in Denmark. More and more I can tell you about it, but to tell you frankly, there is something which we have in our culture
that is helping our patients to be able to recover well and live well. Now, the third one is equally important. In the caregiving example, one of the most challenging one is the one of hearing voices, seeing visions. As a psychiatrist, for a long time, we thought nothing can be done about it except to give medicines. In the last 10 years, they have discovered using computers, what they call avatar therapy. Time doesn't allow me to tell you the details. Essentially, they created an alternative voice of the voice they were hearing and taught the person gradually to control the voice and make the voice disappear. It's a fantastic one. I said it hasn't come into India. I'm sure one of these days it will come. So again, it's showing that the illness symptoms are all under controllable, modifiable, and alterable by the environment. As Rita ji said, घर का माहौल बहुत बदल देने से बहुत फर्क पड़ता है. And by having a mutually satisfying relationship, you can do very well. The fourth story I want to tell you is that equally important as the medicines and what we do, teaching lifestyle practices to the person who is ill. For example, exercise, sleep, nutrition, yoga, meditation. For example, in NIMHANS, yoga meditation is an essential part of all care of the person with mental illness. All of these things contribute to recovery. Now, the last point which I want to make is what Rita ji said about the community. For example, in England, they found the Asian people did better compared to the white people. More than that, if the Asian people lived in a Asian community, that is still better than when they were living in a white community. So the point which I'm making is, it's not just an illness which is not under our control. There are a number of things that we can do. We can change the environment. We can change our reaction to the things. We can make the person to develop positive lifestyle choices, and we can create a caring community. You might ask me, how do you create a caring community? People are afraid of mentally ill people. I've seen a number of families like Rita and Rajeshwari has been explaining to you, who have gone out to their local community to say, look, my son, I'll give you an example of a guy who was going to other people's houses asking for tea. And they used to wonder, why is this boy doing this? Because they didn't know that he had a emotional problem. And when the mother went and told them, they became very supportive. The boy's behavior changed and the mother felt better. So similarly, we can create a network, particularly since there are a lot of young people here. Please reach out to people with mental illness and their families as people with whom you want to have a relationship. By that, you would make them better and the recovery becomes better. And this is the science. And I am expecting that in the next 5 to 10 years, we will reach much more new understanding of caregiving and the course and outcome, and the idea that they have to be kept in institutions will disappear, and the human rights of the people with mental illness will be recognized by everyone. Of course, I will at some point of time talk to you about caregiving stress and how we can handle that. But the science of caregiving is very much in the line with what we have been doing in India. Lastly, I want to tell you, at the time of independence, we had only 10,000 psychiatric beds for 300 million population. England, with 1/10 of the population, had 15 times, 150,000 beds. That means they had 150 times more psychiatric beds than us. And now they've been reduced it to a very small number, so much so that they don't have enough beds. So the point which I'm making is, in India, there is a wisdom of love, caring, supporting, which is the science which is being rediscovered by everyone. Thank you very much. Thank you, sir. I think very well explained. And what I have, my key takeaways, if you ask me, would be that we have to create a caring community. The fact jo Rita ji ne kaha or jo Rajeshwari ji ne bhi kaha, and their work speaks for itself, because both of them are running organizations which are not only working with families, but are trying to address the issue of mental health at the community level. So they are mobilizing support groups, and they are creating an environment in communities where PMIs are given due respect, due credit for their knowledge, or for their talent, or for the special skills that they have, despite the limitations that their health condition may be offering to them.
But I think, and your point about creating a network of reaching out to not just the persons with mental illnesses, but their families, and supporting them, trying to understand and support them, is definitely very well taken. And it makes it very much, it just makes it very much simple to connect the dots and say that each one of us is important, and we can help caregivers, and we can help in the caregiving process. So great, sir. I think thank you so much for sharing your thoughts on this. And as I had announced in the beginning also, this is for everyone, that Dr. Murthy has also shared a guide for caregivers, which is, for their special needs. Sir, yes, if you could just bring it closer to the screen. Right now, it's not very clear, but we are sharing the link in the chat, and people who are interested can download. Yeah, we could just get a glimpse of it, sir. Right. At this angle, it was visible. So this is self-empowerment activities for emotional health, and it is being shared in the chat with you right now. And I hope we are able to download it and share it with people that who can benefit out of it. Let us not forget that as in the past, हमारे पिछले वेबिनार से भी ये बात निकल के आई है कि मैं और आप और हमारे जैसे सभी लोग कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां हमें हमारी मानसिक स्थिति इस तरह की होगी कि हमें भी केयर गिविंग की जरूरत पड़ सकती है. So today we may be caregivers, but yes, we can be care receivers also at some point in time. Let's make it an enabling environment for each one of us to be able to deal with our circumstances as and when the need arises. So let's hold hands and support. That's what all three speakers have also reiterated. Taking the discussion forward, sir, we would now like to take up some of the questions that have come up in the chat. And we also had requested some questions to be DM'd to us on our social media pages. We have collated them for all the three speakers, seeing your interest areas. And to begin with, what has come in the chat, I would like to take up those questions first. So if you just give me a moment, I'll quickly run through the entire chat, and I request the speakers also to look through. And if there is anything that, so I'm just going all through from the beginning. Just a moment. We have, so there is some comment that we can see here. Rita is mentioning about paradigm shift of caregivers as a two-way process. There is no paradigm that is shifted. This is just an opinion, Rita ji. Maybe you can throw some light on it. It was always like this, and I'm glad families are realizing that the word as caregiver is a myth. So, frankly, we are not getting into terminologies, but the point is, anyone who's looking after a person or has been put into circumstances to look after a person who has a mental health condition is a caregiver, and whatever term you may use. Changing times, I think the terminology can change, but the role that is expected of families, and जो डॉक्टर प्रोफेसर मूर्ति ने भी बहुत ही क्लियरली बात करी है कि इनमें हमारी स्ट्रेंथ यही है कि हमारी फैमिलीज हमारे साथ रही हैं, and they have been looking after family members. So Rita ji, this also, I think I'll pose this to you first, and then maybe the other two speakers can comment. कि आज के दौर में केयर गिविंग, केयरर्स, फैमिली केयर्स, इसके बहुत सारे नए नए टर्म्स भी आ रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे, और अलग अलग एस्पेक्ट्स के से लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं. What is your view on it? Because I'm sure each term, a new term that comes, is coming with a perspective. उसके पीछे की कुछ सोच है लोगों की. आपके अनुसार केयर गिविंग या केयरर्स या और ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, और उन सब का भाव क्या है? अगर रिता जी फर्स्ट, एंड देन डॉक्टर मूर्ति. Can you hear me? Yeah. So I think जो यूज हो रही है टर्म्स, वो तो यही ज्यादातर यूज होती आई हैं, केयर गिवर, प्राइमरी केयर गिवर या केयरर. और कहीं ना कहीं जब मैंने पैराडाइम शिफ्ट की बात की है, तो ये भी हम देखते हैं कि जब हम इतने सारे लोगों से जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसी फैमिलीज कम हैं जिनमें इस तरह की सोच बन रही है.
बहुत फैमिलीज अभी भी बहुत बर्डन में की स्थिति में रहती हैं। जैसे डॉक्टर मूर्ति ने अभी बताया कि जो हॉस्पिटल्स बंद हुए उसमें 2-3 चीजें, हाईली एक्सप्रेस्ड इमोशंस ज्यादा, या क्रिटिकल रिमार्क्स ज्यादा, या फिर ओवर इंडल्जेंस। तो ये चीजें अभी भी बहुत कॉमन है और इनको चेंज होने की जरूरत है। इसीलिए चाहे हम शब्द को चेंज करें चाहे नहीं करें, उसके साथ जो एक लाइफ लॉन्ग बर्डन का एसोसिएशन हो गया है, उसको फैमिलीज जो हैं वो चेंज कर सकती हैं। सिर्फ कहने का मतलब मेरा इतना ही था कि बहुत सी फैमिलीज इसको चेंज कर रही हैं, क्योंकि दवाइयां भी हैं, सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं, और क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ रही है कम्युनिटीज में, तो कम्युनिटीज सपोर्टिव बनती जा रही हैं। ये चेंज आ रहा है। सो शब्द आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी लगता है कि शब्द से इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर हम अपने आप को या अपने रिलेटिव को जिसको मेंटल इलनेस है, उनको एक बेचारेपन के पर्सपेक्टिव से ना देखें तो बहुत कुछ बदल सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है मेरा, कि हम सोचें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, और सामने वाले की लाइफ में भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इस सिचुएशन में वो कैसे बेस्ट अपना पोटेंशियल बाहर ला सकते हैं। हम कितनी डिसेबिलिटीज में देखते हैं कि लोग इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, कैसे करते हैं। वही चीज मेंटल इलनेस में है कि जो लोगों में इनहेरेंट पोटेंशियल होता ही है, और फोकस उस पे बना रहे और बीमारी पे कम फोकस हो। बीमारी के लिए जो करने की जरूरत है वो तो जरूर करना है, दवाई लेना है, ठीक दवाई लेना है, और भी सपोर्ट की जरूरत है उनको करना है। पर लाइफ को काफी नॉर्मलाइज किया जा सकता है, ये आजकल बहुत फैमिलीज में हो रहा है, पर इसकी तरफ ध्यान दिलाना इसलिए जरूरत है कि बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जहां नहीं हो रहा, ताकि कम से कम वो देख सकें कि ऐसे ये पॉसिबिलिटीज हैं। आई थिंक कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि once a person, a family member has been diagnosed as a person with an illness, somehow एक family makes sense of doom के बस अब there's nothing after this, that our life is very restricted, or taking it in a way that might make it give you a sense of self pity also. So I think जो आपने बात कही, I totally endorse with it, that we need to relook at it and not make it only a one sided opinion के सिर्फ उस व्यक्ति को देना ही है हमने, बिकॉज उससे हमारे खुद के मनोस्थिति में भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। बट अगर हम सामने वाले को उतना ही रिस्पेक्ट करके, और उनको जो भी उनके स्किल्स और टैलेंट्स है, जो बात आपने कही मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि लेट्स रिस्पेक्ट देम एज ह्यूमन बीइंग्स। Having a mental illness does not dehumanize us. Let's respect each other and give the person a chance. That's all. बाकी दवाई और जो बीमारी है वो अपना समय, उसके लक्षण, उसका ट्रीटमेंट जो रहेगा, वो तो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि वो डॉक्टर के बताए गए तरीके से, जो थेरेपिस्ट देख रहे हैं उनके तरीके से करें। केयर गिवर्स खुद की भी केयर करें ताकि जो है वो बर्नआउट की स्थिति से बचें। And I think Professor Murthy would definitely like to add something to it, to this conversation, sir. Please. I would like to say, Rosalind Carter was a very, very powerful advocate for mental health. She once said, we are all caregivers, or potential caregivers, or will be receivers of caregiving. So we are in that situation. Luckily in India, again, I'm not glorifying it, but this is really true. We don't look at caregiving as a passive activity. We say it as a love, as a, we look at loss, we give love and grow in it. This is the way we look at it. Now, the other thing which very many people ask me, how should we relate to a family with a mentally ill person or a caregiver? I want to give 3 simple activities which each one of us can do. One is in 2001, the World Mental Health Day, the slogan was stop exclusion, dare to care. Take that as your attitude. Number 2, reach out and listen to them. Instead of assuming that they are like this or that, just ask them, tell me a little bit more, what is your life? And third, very important,
reach out and give some help. Cook a meal and take it, or say that, look, when you're going for a movie, I'll be with your son or daughter or your mother or brother, so you can go and come back. Or when you're, all these things are possible to be done. Particularly in the apartment culture that we are into now, all the urban areas, each one of us can reach out and say, look, I'm available every Friday between 5 o'clock and 6 o'clock. You can go and go for the walk or something like that. So each one of us can do these things by normalizing, and both Rajeshwari ji and Rita ji have given an excellent example of how this can be done. Thank you. Great, thank you. So इस चीज को आगे बढ़ाते हैं राजेश्वरी जी, थोड़ा सा आप भी अगर इस बारे में कुछ कहना चाहें तो वो बताइएगा। लेकिन एक खास सवाल है जो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि हमारे सिद्धार्थ जी हैं जो ऑडियंस में, और वो कह रहे हैं कि हाउ टू मोटिवेट अ लव्ड वन टू डू सम वर्क रादर देन बीइंग नॉन फंक्शनल। तो उनका मतलब एक पर्सन विद मेंटल इलनेस से है कि उनको कैसे मोटिवेट करें कि वो बस चुपचाप ऐसे बैठे ना रहें और कुछ फंक्शनल लाइफ लीड करें। प्लीज इफ यू कैन जस्ट टेल अस, गिव अस। थैंक यू अपर्णा, बहुत बड़ी अच्छी क्वेश्चन भी है और बहुत जरूरी भी है सबके लिए। मैं पहले बात तो मैं केयर गिवर्स को मैं बोलना चाहती हूँ, पहले बात तो वो उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हारे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, ये बोलना नहीं चाहिए। ऐसे केयर गिवर कभी कभी हम भी गलती कर देते हैं, चाय में चीनी की जगह गलती से नमक डाल दिया तो कोई पनिशमेंट थोड़ी है। तो ये जो बच्चे जो हैं इनको जो है आप मोटिवेट करिए, आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, आपका जैसे कोई हो ही नहीं सकता। इनको ऐसे मोटिवेट करके जब ये काम करके देती हैं तो इनको छोटा सा अप्रिसिएशन दिया करो, जैसे इनकी मनपसंद का चीज हो गया या कोई गिफ्ट आपने रखा है वो दे दिया, जरूरी नहीं बाजार जाने की। ऐसे आप करोगे, 3-4 चीजें इनको बताओ करने के लिए और आप कहते हो मेरे बस का नहीं है, पहले तो ये मना करेंगे, अब बाद में अपने आप ही कहेंगे नहीं मम्मी मैं ये भी करूंगी वो भी करूंगी। बस ये जो काम जो करना है ये तो पेरेंट्स के हाथ में। केयर गिवर जो है उनको मोटिवेट करो और नो मोर कंपैरिजन। पड़ोसी देखो कितने अच्छे हैं, तो आप पड़ोसी नॉर्मल है, हमारा बच्चा तो पीएमआई है तो उस पर भी वो इतना काम कर रहा है, ये बहुत बढ़िया। इनको अप्रिसिएशन देना चाहिए, इनको मोटिवेट करोगे आप एक दिन खुद समझ जाओगे कि मेरे बच्चा जैसे कोई हो ही नहीं सकता है, इतना तो आप करा सकते हो। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, ऐसे केयर गिवर मैं बता रही, मैं खुद एक बार बहुत बीमार हो गई थी, मेरी बेटी जो पीएमआई है वो केयर गिवर का रोल करके, मैं हॉस्पिटल में थी तो उसने पूरा घर संभाला है। यानी कि कोई केयर गिवर जो रीता जी जो बता रहे थे, जो वहाँ अभी जो श्रीनिवास मूर्ति जी जो बता रहे थे, इवन द पीएमआई कैन बी एट वन टाइम दे विल आल्सो बी ए केयर गिवर। इतनी समझ हमें करना चाहिए, कराना चाहिए, ये होते भी हैं। अभी सवाल उनका काम का बताया तो मैं उनको करिए स्टार्ट विद द टी, एक चाय बनाने का मौका दो उस बच्चे को, वो बनाएगी और धीरे धीरे इसको मोटिवेट करो। दो कहते हैं ना, मारो तो किसी को प्यार से मारो, प्यार से। दीज पीपल नीड लव एंड अफेक्शन। वो हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम शुरू से छुट्टे बोल देते हैं तुम्हारे बस का नहीं है, फिर किसका बस का है, फिर बाद में ये भी उस सवाल उठता है मेरे बाद पता नहीं क्या करेगा। तो ये चीजों का मौका मत दो, अपने होते होते ही इनको इतना तैयार कर दो कि बच्चे बाहर किसी से कोई चीज लेने का मौका ही ना रखे। तो ये सब केयर गिवर के हाथ में है। और मैं इनको बोल रही हूँ स्टार्ट विद द टी, चाय बनाने का मौका दो बच्चे को, धीरे धीरे या जो उसको पसंद है वो दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली देख लीजिए वो बहुत कुछ कर सकती है और डेली कोई ना कोई काम अपने आप ही करना भी शुरू कर देगी। बस एक ही सवाल है, डिमोटिवेट मत करो, मोटिवेट करो। अगर उसने चाहे थोड़ा बहुत 19-20 बनाया भी होगा, उसको बोलो शाबाश, देखो कितना मीठा कितना अच्छा। जब खुद पिएगी तो रियलाइज करेगी समथिंग इज रॉन्ग, तो वो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट भी कर लेगी। तो हम तो यही कहते हैं कि पीएमआई को कभी भी वो डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। मोटिवेट करोगे तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। 80% जो है ना, सिर्फ 20% दवाई का काम है, डॉक्टरों का काम है, 80% हमारा काम है। हम क्या कर रहे हैं, हम इन बच्चों को वो कराई है ना, सिखाई है ना क्या क्या करना क्या नहीं करना। एज का कोई मतलब नहीं है,
कि इस एज में तुम्हारे बस का नहीं, इतनी बड़ी हो गई है, नहीं कर सकते। हम तो इतने बड़े हो गए, हम भी कभी कभी हमारा ध्यान कहीं होता तो हम गलती कर देते हैं। ये थोड़ी कि इसका मतलब हमें कोई पनिशमेंट या हमें जेल में डाल देंगे, वो नहीं है। बच्चों को जो है ना मोटिवेट, प्यार, इस ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को काफी सारा पेशेंस होना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो क्षमता नहीं है इनको इनको देखने का, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये है कि गुस्सा जरूर आता है, और मैं जो कह रही हूँ, मुझे भी कभी गुस्सा आता ही है, मगर इस वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है, काम निकालने का मतलब है। इनसे जितना अच्छी तरह से मोटिवेट करोगे ना, ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको जैसे पहले भी सबको बताती हूँ, मेडिसिन के साथ मैंने 1 साल डे केयर सेंटर में भेजा था, जिससे उसके अंदर इतनी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मनी वैल्यू और हाइजीन, जो जो चीज इसमें जरूरत है मेंटल हेल्थ पर, वो सारी चीजें वहां पर आ गई थी। तो मैं कहती हूँ ऐसे केयर गिवर कहीं नजदीक में कोई है, ऐसे डे केयर है, तो आप भेज दीजिए। इसमें कोई डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो डे केयर सेंटर में रेगुलर काउंसलिंग वगैरह होती है। और दूसरी बात है, 5-6 घंटे जो है बच्चे हमें छोड़ के अकेले भी रहते हैं, तो जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है। तो सवाल उस पेरेंट्स को आप बताइए कि स्टार्ट विद द चाय। चाय तो छोटी सी चीज है, वो अपने आप ही समझ जाएगी, बनाना शुरू कर देगी। या जो उसको पसंद है, आपको पता है ऐसे कैरेक्टर, उसको कपड़े निकालने का पसंद है, कपड़े धोने का पसंद है, जो पसंद है उसको ऑटोमेटिकली दे विल बी फंक्शनल। कोई ऐसा चीज ही नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक होते हैं। Great. I think thank you Rajeshwari ji. These are very simple tips. मत आपके बात से जो मुझे समझ आया कि कोई भी काम कैसा भी हो, जो उनके शौक का हो, उनकी पसंद का हो, सिंपल हो, जैसा भी उनको करने दीजिए, और एक बार ही शुरुआत होगी तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उनका और हमारा दोनों का बन जाएगा, और धीरे धीरे वो लोग और भी अपने लाइफ जैसे कर सकते हैं। Hopefully I mean we have to, I'm sure we are all very hopeful that eventually our person who's has a mental health condition will definitely improve and recover fully and lead a normal life. तो उस स्टेट पे जब जिस समय उनके सिम्टम्स सबसे ज्यादा है, अगर हम वो एक सपोर्टिव सा एटीट्यूड रखें और सिंपल से सिंपल कामों से शुरू करते हुए, जैसे आपने बताया, अगर हम आगे बढ़े तो we'll be able to make a person far more functional. Dr. Murthy, so there is another question. This is from Ritu Sharma ji, and she says that she would like you to know how we as family carers can help our loved ones to handle voices. As as PMIs, they tend to hear a lot of voices. And आपने थोड़ा अवतार थेरेपी के बारे में जो बताया, अगर उसको थोड़ा और elaborate कर दें, that how can it be helpful, if you can just throw in a few words on Sure. that. I'll be very happy. Before I do that, I just want to refer to this book of Rajeshwari. It's an excellent indication of how to be a caregiver. For example, the first chapter of this book, that is, Does He Know a Mother's Heart? It's a fantastic book. Everyone should read it. He says that when he was diagnosed in World Bank in Washington, they told him, you go back to India. Don't stay here because India is better for your child. Secondly, he makes sure that everywhere he takes him there. There is one video of his son blessing the Dalai Lama. If you look at the YouTube, so include the person involved. Now, coming to the voices, what happened was about 12 years back, a professor left, who is a very, very pioneering person, no more now. He read somewhere that when people were distracting their mind, they were able to control the voices. And this was that information technology. He did was, he created a visual identity, which he called it as avatar. And that avatar, he put it in another computer. Another therapist was there and taught the person to gradually say, don't talk like that, don't do that. In about 10-12 sessions, taught the person to, the ill person was thinking that he's controlling the toy. Actually, he was controlling his ideas. Because the toy was, the therapist was gradually allowing the control of the voice to decrease from the avatar to that of the individual. Obviously at this moment, it's a very technology oriented one, but if they can send me an email, I'll be very happy to send some articles relating to that, do that.
and hopefully it will be. The point which I'm making, it doesn't have to be so implicated. For example, one of my patients carries my voice for about 5 minutes. Every time he hears voices, he puts on my voice. Hopefully he finds my voice more soothing than that other voice, and so he handles that. So there are so many ways of doing it. It could be a bhajan, it could be a mother's voice, and it could be the water running or something or the other. So what we need to do is that we should not think these are permanent. The feeling that we had when I started psychiatry 50 years back, we thought all these things are written in stone. Everything is changeable. Everything is modifiable. All that we need to do is to do it together. And as Rajeshwari ji pointed out, please don't exclude the person. Instead of saying that, better tum idhar raho, main bazaar ke jata hu, chalo, bazaar mein jayenge. And you make him or her choose the vegetables or things or something. Immediately you are stimulating his social skills. It doesn't have to be going to a psychologist or a psychiatrist or a daycare center. You can do a lot at home. And this is my message to the caregivers. And Rita Sharma ji, please ask her to send me an email. I'm just putting my email to that. I'll be happy to send a couple of articles about that or talk to her and help her with that. Thank you. So, Dr. Murthy, Aprajita will share your email ID in the chat for the participants to reach out to you. I would to share one question that we have received on the social media and which we would like all three panelists to please throw light on. To begin with, from Rita ji, how do caregivers take care of themselves and what can they do when they get upset or stressed in the caregiving process? क्योंकि caregiving कैसे करना है ये तो हमने काफी बात करी है आज, लेकिन caregiver अपना खुद का ध्यान कैसे करे वो चीज जो है, और खुद का स्ट्रेस और बर्नआउट का थोड़ा सा डॉक्टर मूर्ति ने बताया भी, तो मुझे लगता है कि अगर आप तीनों जने थोड़ा सा हमें ये भी बता दें कि केयर गिवर्स अपना ध्यान कैसे रखें और अपने स्ट्रेस को, बर्नआउट को कैसे कंट्रोल करें. रीता जी, we'll begin with you. We'll come on to Professor Murthy and then I'll request Rajeshwari ji. Yeah, over to you, Rita ji. Yeah. So मुझे लगता है कि सबसे जरूरी ये चीज है कि हम अपने रिलेटिव की लाइफ का सेंटर ना बन जाएं. के लिए अपना सर बने रहे कि हम क्या चाहते हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारी क्या टैलेंट्स हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हम किन लोगों से मिलना चाहते हैं, हमारे लाइफ का क्या गोल है. ये सब चीजें हम छोड़ ना दें इसलिए कि हम एक केयर गिविंग रोल में हैं. और अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हम खुद भी दुखी होते हैं, स्ट्रेस के अंदर आते हैं और दूसरे को के ऊपर भी हम बहुत कुछ थोप रहे होते हैं बिना जाने हुए. हम सोचते हैं हम उसके भले के लिए कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन लोग बहुत बर्डन उससे फील करते हैं. और सबसे मुझे तो लगता है सेल्फ केयर का तरीका यही है कि हम टाइम निकाल के अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहें जो चीजें हम करना चाहते हैं. सिंपल एग्जाम्पल डॉक्टर मूर्ति ने भी दिया कि क्योंकि ये तो पक्की बात है कि किसी के कुछ केसेस में जो सिवियरिटी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि फैमिलीज को सारा टाइम अटेंशन देना पड़ता है. लेकिन उसमें भी हम नेबर्स का सपोर्ट लें, फैमिलीज का सपोर्ट लें और अपने आप को ब्रेक देके वो काम करें जिससे हम एनर्जाइज होते हैं, जो हमको लगता है कि जो हमें एनर्जी देते हैं. और अपने लाइफ के गोल्स जो हैं उनको, अपनी हॉबीज को मतलब उनकी तरफ पूरा ध्यान देते रहें. लाइक मैंने अपने फादर को देखा कि फोटोग्राफी उनकी हॉबी थी, उनको एक बार हार्ट अटैक आया, उसके बाद से कुछ चीजें उनकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज हुई. फिर मेरे ब्रदर को मेंटल इलनेस थी, उसको लेके केयर गिविंग रोल के कारण मदर बिकेम बेड रिडन, लेकिन वो अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक 120 तक व्हील चेयर पे नीचे जा गार्डन में फोटोग्राफ्स खींचते ही रहे. और जो उनका शौक था कंप्यूटर में फिर उनको पेंटिंग्स की तरह बनाना, वो आखिर तक करते रहे. और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से आदमी का हौसला बहुत बना रहता है, बिकॉज वन इज फुलफिलिंग वन्स ओन डिजायर्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ द अदर पर्सन. तो मुझे तो यही सबसे जरूरी लगता है. थैंक यू. ओवर टू यू प्रोफेसर. थैंक यू वेरी मच. ये काम बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए कि 3 चीजें सामने आती है कि अबाउट केयर गिवर्स हेल्थ.
First and foremost, caregivers' health is always compromised all over the world. They have 2 to 3 times more physical and mental health problems compared to the general population. Second thing is, all of them want to live as long as possible because they want to be the security for the family member with a mental illness or disability. Third thing is that they will necessarily experience a lot of parishani, distress, moments when you feel other people are discriminating, or when you feel hopeless, or you worry about the future. We did this work in the last 2 years in Bangalore called Association for Mentally Challenged. What we found was during the COVID, particularly when children were not coming to the school, they were all at home, there was a lot of problems. So we developed 5 things which are evidence-based, which are proven to increase longevity by at least 10 years. What are they? Exercise, at least 30 minutes, sleep 7 to 8 hours, eating lots of vegetables and fruits, nutrition, then yoga, meditation, and being connected. All these things are there in this book, which you can download it. We describe why, what, how, with examples from each of these people. The second thing that we did was to teach them skills to take care of themselves. For example, during COVID, all of us wore a mask or washed our hands. Similarly, when you have distress, you can do 5 things. Again, I always do things in 5. Forgive me for that. One is, have a friend whom you can pick up and say, यार बहुत परेशान हो गया आज, मेरे मन में ये उलझन हो गया, मेरा बेटा ऐसे कर लिया या नेबर ऐसे कर लिया, went to the temple, someone looked at my son, stared at my son, or in the wedding they said he's taking long time to have his meal and I got very upset about it. Have someone with whom you can talk. If you have some experience like suicidal ideas or hopelessness which you can't share, journal, write it down. Journaling is as good as talking to a psychiatrist. My psychiatric colleagues will be very unhappy with me, but it's as good as talking to a psychiatrist. As Rita ji pointed out, build in your daily life some pleasurable activity. Music, gardening, drawing, painting, or going for whatever it is, build into that and say, this is my time. And fourth one is, whenever you have a problem which you think it cannot be handled, think differently. See, and you'll find that you have handled it also differently. And lastly, very important, this is very passion for me, and if anyone writes, I can send a lot of material, spirituality. In our spirituality, we have a tremendous amount of stories. I'll just give you one story of a person saying that when Kunti was asked by Lord Krishna, she said, give me trouble so that I'll remember you. It is that type of an approach we have. Similarly, a person with severe cancer said, I read every day Sundarkanda, because when I read Sundarkanda, I think of the hope Sita had, and I also feel hopeful. Similarly, there are a whole lot of things which are there in Quran, in Bible, everywhere it is there. And dip into it, use it, and make a new purpose in life, new meaning. As I said, don't look at loss, look at your love and growth as we see. And then these are 25 stories of families. We have brought it together. And most important, as Rajeshwari ji and Rita ji has said, learn from other caregivers. I'll give you just one example of how caregivers can give. For example, there was a boy who needed to do exercise and he was not willing to do it. The mother mixed up all the grains and said, "Beta, isko alag karo." So he started separating them, and that was the exercise that he had to do. So you can this doesn't come in any textbook, didn't come from any psychiatrist. It will come from another family member. So it is possible to be strong. 5 things, the 5 skills that you can acquire it, and all of this is in this one, and it's available easily. And if any one of you want to translate it to Hindi, we have it only in Kannada and English now. Please let us know. We'll be happy to give you permission. Thank you. Great, Dr. Murthy. I think perfect. Lots of very, very useful tips. And I like the idea of 5. So we'll also use it from next time. Rajeshwari ji, इसी बात को अगर आप हमें संक्षेप में अपने लिए बता दें कि एज अ केयर गिवर आप अपना ध्यान कैसे रखती हैं, तो आई एम श्योर कुछ हमें और 1-2 बहुत ही यूजफुल टिप्स मिल सकती हैं जो बाकी लोग भी एज केयर गिवर्स शायद अपना सके. हाँ जी, अपर्णा जी, एक बात मैं बोलना चाहती हूँ. ऐसे केयर गिवर
शुरू में मेरी मदर मेरी बेटी को देखती थी, मैं चली जाती थी ऑफिस वगैरह में, तो मेरी मदर क्या करती थी, सारा दिन ऑफिस में भी काम, बच्चों के पीछे भी टेंशन ज्यादा रहता है, यू टेक रेस्ट, या तो बाहर चले जाओ, थोड़ा आउटिंग वगैरह होके आ जाओ, मार्केटिंग करा लिया, कोई सामान लेने आ गए, ऐसे मैं करने लगी थी। उस वक्त मेरे अंदर इतना स्ट्रेस नहीं था जितने मेरी मदर के अंदर था। मगर एक ऐसा टाइम आ गया, मदर चली गई तो मेरे पर सारा आ गया। तो मैं क्या करती थी, जैसे मोती जी बता रहे थे, कभी अपने कुछ ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स को मैं शेयरिंग करती थी, उनको जबरदस्ती बुला के क्या हाल है कैसे हैं करके। जैसे आप सब जानते होंगे, मेरी मॉर्निंग जो गुड मॉर्निंग होती है वो दैट इटसेल्फ मेरी स्ट्रेस खत्म कर देती है, कि लोग जो है कुछ ना कुछ कमेंट्स उसमें देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको सुन के। साथ में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार जो है मैं अपनी बेटी को भी साथ लेके मार्केटिंग में जाती हूँ, उसकी मर्जी की वेजिटेबल्स वगैरह खरीद लिया, उसकी मर्जी का सामान ले लिया। जब मैं घर आती हूँ तो इतना मैं लाइट फील करती हूँ, और मेरी बेटी भी इतनी हैप्पी होती है, आज हमने मार्केटिंग कर ली, इसी बहाने कुछ मार्केट में खाना वाना भी खा के आ गए, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह करके, तो दोनों की रोल क्लियर हो जाता है। उसका भी स्ट्रेस नहीं होता है कि मैं मम्मी के साथ बाहर होके आई हूँ, और मुझे भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगता है। ऐसा है कि ऐसे केयर गिवर जो है ना, मैं मानती हूँ हर एक के अंदर एक टेंशन है, थोड़ा स्ट्रेस है, बस बट उसको कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपने सोचना है कि हमारे पास इन बच्चों के लिए जो प्रोविजन करना है उस पर गो थ्रू कीजिए। अपने ऊपर ही सारा बोझ लेके बैठने से आप अपने आप को जितना बिजी रखोगे, तो स्ट्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है वहां पर, तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बच्चे भी जो है अच्छे खासे हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आपको बताया, मेरी बेटी तो पेशेंट भी लाती है कि मेरे मम्मी से काउंसलिंग करा लो, वो कंप्यूटर में जाती थी, कहती थी मम्मी अपने आप हंस रहा है, ही इज हैविंग द हालुसिनेशन और डिल्यूशन। मैंने कहा, मैं उससे पूछती थी आपको मालूम है हालुसिनेशन डिल्यूशन क्या होता है? कितने डॉक्टर मेरे से पूछते थे, मुझे भी मालूम है, वॉइसेस आर कमिंग फ्रॉम द बैक, कान से आवाजें आती है। वो लड़का कुछ ऐसे है, वो कहती थी मेरे मम्मी से काउंसलिंग, दो आई एम नॉट ए काउंसलर, आई एम ए केयर गिवर। कहने का मतलब है आप बच्चों को इतनी इस लेवल पर आप तैयार कीजिए, तो मदर को कभी भी स्ट्रेस नहीं आ सकती। तो मैं तो यही यही कहती हूँ, बाहर जाइए, आउटिंग चले जाइए, चार लोगों से मिलिए, हेलो हो जाती है, तो स्ट्रेस कहाँ पर है वहां पर, स्ट्रेस का अकेले रोल ना ही नहीं। महसूस करें और ना ही रहे। तो हाँ ये बस। आपका जो है ना बात बहुत ही यूजफुल है। और आज की कॉन्वर्जेशन को रैप अप करने से पहले मुझे चैट में एक कमेंट जो है मैं प्लीज आप तीनों से शेयर करना चाहूंगी और आपके व्यूज लेना चाहूंगी, बिकॉज दिस माइट बी हेल्पफुल टू अदर सम ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट्स हियर। रचना सिकवर उन्होंने लिखा है, आई वुड लाइक टू आस्क समवन वुड लाइक टू सेट अप अ कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप and would like to learn from the experiences of the panelists. Could they share about a platform or programs run by their organizations which can be joined for the same? In my hometown, where there is hardly any organization for giving support, emotional and educational support to the families of PMI. तो आई नो आप लोग की संस्था जो है संबंध भी एक सपोर्ट ग्रुप जो है जो है ना केवल बना रहा है बट उनको स्ट्रेंथन कर रहा है। राजेश्वरी जी भी कई सपोर्ट ग्रुप्स के मेंबर हैं, शांति दिल्ली है, फेसमी है, आरएफएस अपनी तरफ से जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट ग्रुप्स को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर, रीता जी कैन वी स्टार्ट विद यू, if you can briefly in a minute tell us tell the participants about what are support groups to begin with, and ऐसे कौन से support groups हैं जो इस समय जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं वो अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग उनकी डिटेल्स जो है राहत की और आरएफएस की जो सोशल मीडिया शेयर कर देते हैं। आप लोग इस वेबिनार के बाद हमें थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली दे देंगे तो हम वो भी शेयर करके, so that people can then reach out to those groups and join them, खासकर जैसे जिनके शहर में नहीं, क्योंकि अब इस समय जैसे आपने बताया आपके बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स जो है ऑनलाइन मिलने में खुश हैं और उनको वो ज्यादा सुविधाजनक लगता है। तो आई एम श्योर इस समय थैंक्स टू दीज ऑनलाइन मीटिंग्स
जो physical distance का इतना issue नहीं रह गया, and we can be sitting in our home at in any corner of the country, connect with the best of support groups and the experts who are their members and take advice. और बाकी जहाँ जरूरी हो वहाँ face to face तो है ही है. But support groups के बारे में रीता जी अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, और फिर राजेश्वरी जी बता सकते हैं, and then Dr. Murthy, you can end this conversation. Yeah, sure. Please, रीता जी. यस, सो हमारा गुड़गांव में एक फैमिली सेल्फ हेल्प ग्रुप है सिटी में, और बाकी हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं फैमिलीज के वो विलेजेस में हैं. तो वो तो पर्सनली वहाँ लोग मिलते हैं, हम लोग हर फ्राइडे को मिलते हैं विलेजेस में वंस अ मंथ. लेकिन जो सिटी में ग्रुप है वो ऑनलाइन है आजकल, क्योंकि कोविड टाइम में बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया था जो अलग अलग स्टेट्स से थे और जिन्होंने हमको अप्रोच किया था. और बहुत कन्वीनियंट गुड़गांव और दिल्ली की फैमिलीज के लिए भी हो गया कि भाई आना नहीं पड़ता इतनी दूर, घर से ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं. सो उनको ज्वाइन करने के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. मैं चैट बॉक्स में वहाँ ईमेल आईडी डाल देती हूँ जिस पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मैं अपना फोन नंबर भी डाल देती हूँ, तो जो भी कनेक्ट होना चाहें वो कर सकते हैं. थैंक यू. राजेश्वरी जी, आप भी अगर शांति दिल्ली के बारे में बताना चाहें और के बारे में तो वो भी बता दीजिए. थैंक यू अपर्णा. ऐसा है कि हर केयर गिवर्स को एक सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहिए, जिससे उनके अंदर एक नॉलेज आ जाती है भाई आपने इस प्रॉब्लम के लिए आपने क्या सोल्यूशन लिया, एक शेयरिंग हो जाती है, वो टिप्स वो ले सकते हैं. और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टिग्मा, ये बीमारी जो बोल रहे हैं, उस ग्रुप में आने से जो है ना, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऑल आर इक्वल. ये किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की भाई, किसी की बहन, यही है. अभी जो है ना, हम जो सपोर्ट ग्रुप में पहले मैंने अपना सपोर्ट ग्रुप जो है हॉस्पिटल से शुरू किया था, उसमें भी ऐसा है कि जब केयर गिवर्स को मैं बात करती थी तब पीएमआई को नहीं मैं बुलाती थी, क्योंकि आपस में इनकी झगड़े हो जाते थे. तो उनकी भी सुनवाई अलग में सेशन लेती थी, इनके अलग लेती थी. अभी जो इस वक्त वो जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो अभी मैं एक एडवोकेसी ग्रुप है शांति दिल्ली के नाम से, केसमी के जो ब्रांचेस है उसको दिल्ली में शांति दिल्ली के नाम से हम चला रहे हैं. क्योंकि उनको जो है अगर ज्वाइन करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आप लोगों के पास है, उसमें डाल दीजिए या चैट बॉक्स में मैं डालती हूँ. तो उससे क्या है कि इसमें बाद में वो कहते हैं ना, पहले तो कहते हैं वी आर नॉट अलोन, उसके बाद कहते हैं व्हाट हैपेंड, हमारे बाद क्या होगा इनको. उसके लिए मैं उनको पूरी सुविधा से मैं सारा कुछ गाइड करा सकती हूँ. वो जो उसमें जो है हम एडवोकेसी में इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे अभी आजकल इंश्योरेंस है, तो हाउ टू मेक द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो चीज़ जरूरी है, हाउ टू गेट द लीगल गार्डियनशिप, जो हमारी जो एक्ट है उसके अंदर ही उसी दिहारे पर ही हम इनको काम करा देंगे और हेल्प भी करेंगे, जिससे इनकी जो चैलेंजेस हैं उसकी सोल्यूशन भी मिल जाएगी. तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो शी कैन टॉक विद मी इन द मेल और फोन. तो आई एम रेडी टू हेल्प. और बाकी जो जैसे रीता जी ने बताया है कि दिल्ली के लिए तो मैं बता रही हूँ, RFS मृदुला जी चलाते हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छा वो हिसाब किताब है. और जैसे राहत है, इनके तो फ्लोर गेम्स और क्या क्या आप लोग करते थे, तो वो भी काफ़ी अच्छी मतलब वो है. तो पेशेंट के लिए हमने 2-3 ऑप्शंस दे दिए उनको, तो जो भी उनको अच्छा लग रहा है उसमें ज्वाइन करना चाहिए. वो जरूरी है, नॉट ओनली फॉर अस, हर ये जो अपने साथ जो भी पीएम फैमिलीज हैं उनको भी ये गाइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से. So I think point taken कि किसी ना किसी सपोर्ट ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें. Yes sir, Dr. Murthy, please. पिछले कई महीनों में अमित बख्शी जी from Pune has started a support group called Mission. It is MISSION. It's Mission Mental Illness Associates in Conversation. I can tell you, in 50 years of experience, I have learned more from this particular group. It's extremely active every day, 10-20 messages, backwards, forwards,
Similarly, there is another one called Swan Lok. Of course, the older ones like the Nirmala Srinivasans, Fasten Me, Amend are there. I totally support Rita ji and Rajeshwari ji. Please join a group and be part of the group to learn from each other. If nothing else, at least you will be able to share your problem and you will find some very good ones. Lastly, I want to just leave 3 messages. We have tremendous resilience in all of us and we must capitalize upon that. Second thing is, this is a developing field. Like I told you about avatar therapy, new things are coming up. Don't lose hope. And I've seen things happen to people after 10, 20 years also. Lastly, use this as an opportunity for growth rather than feeling burdened by it. I can promise I can serve for 10 years and I can tell you that I've learned a lot from my illness. And so each one of us can learn from it and grow up to be a fuller, better person. That's the promise that I want to share it with them. Thank you. So much. I think so. All of you have shared such wonderful insights, and I'm sure each one of us appreciates. जो यहाँ पर caregivers है particularly, I'm sure we have really appreciated, and others I'm sure have also picked up some very good tips on how to look after themselves, look after their near and dear ones, and maybe offer some kind of information or advice to those who are who may be caregiver themselves. So Rita ji wants to just say something, please. Rita ji, do you have something to say? आपका माइक म्यूट पे है रिता जी. तो यस, मेरा मैसेज यहाँ से जा नहीं रहा है, पर अपराजिता मैंने आपको डिटेल्स भेजी हैं, आप चैट पे प्लीज डाल दीजिए ईमेल आईडी और फोन नंबर. She has just done that. She's done that for you, Rajeshwari ji, and I think Dr. Murthy ke liye secretary hai. Acha, so I think. Can I just say it's been a wonderful session. Aparna ji, you have done a fantastic job. All of you, the RFS, RAHAT, and the college, fantastic. Lady Irwin College, fantastic. Thank you so much. We really appreciate and all 3 partners sincerely thank you for taking out your valuable time and so freely sharing your thoughts, experiences, and insights. We'll move towards the end of the program, and before wrapping up, I have the honor to invite Dr. Jha. Here, as you can see, he is the Secretary, Richmond Fellowship Society in India, Delhi branch. Sir will offer a vote of thanks to all of us who are present here. There is also going to be a quick feedback question poll in the meeting right now as Dr. Jha finishes speaking, so that we can get some insights from the participants also as to what did the webinar go, and if they can give us any comments and suggestions to plan the next one. Though the theme of the next and the last in the series of these webinars is going to be on volunteering. तो जहाँ सब practitioners or families or जो कॉमन पीपल हैं, हम लोग, मैं और आप, हम लोग जहाँ इन संस्थाओं के भाग हैं, साथ साथ इन संस्थाओं को हमारी मदद की भी जरूरत है. तो अगला वेबिनार वॉलंटियरिंग पे है कि मानसिक स्वास्थ्य के विषय पे अगर आपको और मुझे कुछ भी काम करना है और हमें लगता है कि हमारे में वो पोटेंशियल है, हम अपना थोड़ा बहुत भी समय या योगदान देना चाहते हैं इन संस्थाओं को सपोर्ट करने के लिए, तो अगला वेबिनार जो है वो वॉलंटियर्स को सेलिब्रेट करेगा, वॉलंटियर्स के काम को आप सबको बताएगा और वॉलंटियर करने की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, खासकर यंग पीपल हु आर हियर. वो लोग आजकल अब पढ़ाई में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम सबको वॉलंटियरिंग करनी है, इंटर्नशिप करनी है, तो इस तरह के हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कई तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए. जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आई एम श्योर है ही हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्किल सेट्स दैट यू ब्रिंग टू द टेबल. But we look forward to the next one on volunteering, where young people, young and old, all volunteers working with Richmond Fellowship Society, different branches will be coming and sharing their experiences about volunteering. And we will have mental health practitioners also sharing their point of view on, about how important it is to volunteer and how to volunteer in a meaningful way. Over to Dr. Jha. Please offer the vote of thanks on behalf of the organizing committee and take the session forward. Thank you. Thank you, Aparna. मैं तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर मूर्ति का, रीता सेठ, राजेश्वरी, कि आप लोगों ने हम सबको इतना ज्ञान प्रदान किया और ज्ञान के साथ ही
एक विश्वास जगाया जो रास्ते पे कभी कभी डगमगा जाता है, by highlighting the scientific thought process which has crept in the world of PMI, the personal experience from the caregiver's point of view. तो इन सब बातों को सुनने के पश्चात मुझे बड़ा गर्व है कि इतना अच्छा वेबिनार के माध्यम से इतने सारे जवाब, सवाल उत्पन्न हुए, खास करके पार्टिसिपेंट के तरफ से. So honestly, I am very, very grateful, and it is a heartfelt thanks to all of you, especially, the gentlemen and the two great ladies who came and spoke on behalf of RFS, RAHAT, and Lady Irwin, and the RFS family as a whole. I thank you a lot, and I would be grateful that if you further disseminate such beautiful knowledge, and especially trying to highlight the cultural ethos of which this country is so famous, and it is being rediscovered. While I was listening to the scientific, validated studies being carried out, it really made me feel blessed that India is being rediscovered today. And it reminded me, while I was listening to Professor Murthy and the personal thing, it reminded me of what, it is said in the Quran. It is spoken there about which rarely anybody talks. The founder of this great religion, the spiritual leader of this great religion, he had said to his shishyas, मुझे उस देश में जाना है जहां से ये खुशबू आ रही है. It's so amazing to hear the Prophet speak so high. And today, especially in the world of science, you look at all the great scientists who have established and given so much to mankind, speak so rich about our culture. I'm really, and talking about burnout, I remember when I became a part of this world, one of my founding fathers said, Dr. Jha, the attrition rate is very high. And I said, sir, I understand. But then, if one takes responsibility of what they are around for and becomes accountable, the world would be a much better place. And accountability, as Professor Murthy was saying, it is just on your 5 fingertips. And they are very small letters. If it is to be, it is up to me. If we all start realizing this, the world will be a much better place for this PMI. I tell you, when I go to Viswas, they are more concerned about my welfare. And I tell you, there are occasions when while walking out, tears just streams down. And I say, look at these people. They are more worried about me than about being left at Viswas. That is the beauty of their world. Once you start looking upon them as a human being, everybody can make a difference. And thank you, sir. Thank you, ma'am. And of course, my organizer, Archana, and, Aparna, Dr. Seth, for having taken the initiative and bringing forward and reinforcing इन विचारों को फिर से अटूट इन माध्यमों से करके और मानव जाति को और खुशियां के नजदीक लाके, मैं उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं इन सबों का. धन्यवाद मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट तहे दिल से वंस अगेन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं फॉर अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू. Aparna, all yours. Thank you, Dr. Jha. We'll now move on towards the poll, which is coming on the screen for everyone. Please, your feedback is extremely important for us. Do give us, it'll just take maybe 30 seconds for you to tell us about your views on today's webinar and plan for the next one. While the poll is on, I would like to also add a little more about Vishwas. Vishwas is a residential facility for persons with severe mental illnesses. And it's a halfway home
working more like a long stay home for persons with mental illnesses. And it is occupied by members whose families somehow, because of their circumstances, are not able to take care of them because of their, several personal and professional reasons. But if any one of you here knows a family who needs a place for their loved one to stay and be looked after, then Vishwas is one such place. You can check on the website of Richmond Fellowship Society, Delhi. And जो बाकी branches भी हैं, उनके भी half pay homes या full stay homes चल रहे हैं. बैंगलोर की website check कर लीजिएगा. So ना जाने कब किसको जरूरत हो, please do reach out to these institutions, check their websites. Yes, thank you, Prajita, for putting the RFS Delhi website in the chat. And I'm sure the links to other websites can be easily reached out to by the participants here. So extremely thankful to everyone. I would now request anyone who would like to, turn on their camera and be part of the group picture. We'll give you a quick 20 seconds for a group picture, and then we leave. Thank you so much, everyone. Thank you for turning on your cameras. It's extremely, encouraging for us to attach faces to names. And we hope कि आपने आज के webinar में से कुछ भी आज अगर आज यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो it will be an achievement, a sense of achievement for us. Thank you so much. Thank you.